Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to another important daily current affairs series session in which we cover the important general awareness and economic and social issues current affairs from exam point of view. And my dear friends, today's session is really going to be very helpful for all of you because today we are going to cover three reports that we have seen in the month of November 2025. So if I'm audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session and we can ensure that all the technicalities of the session are quite well, right? So guys, today we are going to discuss the important current affairs from the month of November 2025, and today I am back with the very important reports that we need to cover for upcoming examination, be it you are preparing for the RBI mains 2 phase 2 exam or the NABARD grade officer phase 1 exam, right? So guys, before starting the session, please give me a thumbs up in the chat box so that I can ensure that I am audible and visible to all of you. So I can see here in the chat box that yes, people have given me the response that everything is good and we are good to go. So guys, let me tell you here that we conduct these sessions across the three important stages. First we revise the important aspects of the previous session, right? That is the quick bites of the last session. Then we move on to the current affairs of the present session, and then we move on to solving the MCQs on the same, right? So these are the three stages of the exam. And today we are going to cover three important reports: India's dirtiest cities, emission gap report, and World Cooperative Monitor 2025. So all these are important for your NABARD phase 1 examination and RBI phase 2 examination के लिए अगर हम देखेंगे तो emission gap report, dirtiest cities report ज्यादा important है. I hope this is clear. और अब अगले अपनी इन रिपोर्ट्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे अपने पुराने सेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बाय हैविंग अ क्विक bites of the last session, right? So here we start and I want all of you to give me a right answer to these questions in the chat box. It will help you to understand that whether you are able to cover and retain and recall all the important points from the previous session or not. Okay, so welcome to the quick bites of the last session, and here the first question is you have to tell me the name of the first South Asian country which have joined the United Nations Water Convention to promote cross-border cooperation. So what exactly is the name of this country? Quickly tell me in the chat box. What is the name of this country which became the 56th overall and the first South Asian country? It is Bangladesh. Bangladesh is the right answer. Now guys, when it comes to this United Nations Water Convention, so it was adopted on 17th March which year? What is the year when it was adopted? It was adopted in 1992. And can anybody tell me that in which year it was been adopted by when it became open for the complete world? What is that year by which it became open for all world? That is in 2016. 2016 में ये ओपन हुई थी ग्लोबली, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोऑपरेटिव कुंभ 2025. तो आज हमें कोऑपरेटिव के ऊपर रिपोर्ट भी कवर करेंगे, बट उससे पहले जो लास्ट सेशन में हमने कवर किया कोऑपरेटिव कुंभ 2025, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था. विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट along with the Ministry of Cooperation? What is the name of this organization? Let me see who will tell me the right answer. Guys, let me tell you that it is very important for you to ensure that you are participating in the session, because if you won't be participating, then it is not going to be productive for you. So make sure that you are participating by giving me the answers in the chat box. So the name of this organization is NAFCUB, which has, along with the Ministry of Cooperation, has basically organized the Cooperative Kumbh 2025 conference. And when it comes to this conference, let me tell you that we are also marking the International Year of Cooperatives. So which year has been celebrated as International Year of Cooperatives? So guys, it is year 2025 only, 2025. And during this conference, a declaration was being adopted. What exactly is that declaration is? The declaration is Delhi Declaration. So Delhi Declaration को adopt किया as the roadmap for the expansion of urban cooperative banks. Now guys, during this, the umbrella organization that is NAFCUB, it has come up with the two important digital initiatives. क्योंकि हमने बात की थी, with the help of this conference, we are basically targeting to boost the digital capabilities of the urban cooperative banks. Now what exactly are these two initiatives which have been launched by this particular organization? These are Sahakar DG Pay app, जहां पर लोग
डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाएंगे. एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज सहकार डिजिटल लोन ऐप. सो सहकार डिजिटल लोन ऐप में दे विल बी एबल टू एक्सेस द लोन facilities from the urban cooperative banks on a digital basis, right? So this is the right answer. आगे बढ़ते हैं. The Center for Development of Telematics has signed an MOU with which IIT to set up the Center of Excellence. Sorry, my dear friends. So here you need to identify the Center for Development of Telematics has signed an MOU with which organization to set up Center of Excellence. So where exactly the Center of Excellence will be set up? It is IIT गांधीनगर. IIT गांधीनगर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को सेटअप किया जाएगा. बिल्कुल सही जवाब. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज ऑन द इंडियन एयरफोर्स फाउंडेशन डे. ऑन विच ईयर, ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट दिस डे? So we celebrate this day on 8th of October every year. 8th October every year we celebrate the foundation day of Indian Air Force. It was established in 1932. तो इंडियन एयरफोर्स को 1932 में एस्टैब्लिश किया गया था. And what exactly is the name of the Chief Air Marshal of the Indian Air Force who is heading the Indian Air Force? So that is Amarpreet Singh. AP Singh is the right answer. Moving ahead. So Dash has been appointed as the next Secretary General of the United Nations Tourism. So UN Tourism के next General कौन बने हैं? Let me see who will give me the right answer. So last question का answer I can see here. Ananya has given the right answer. Well done, Ananya. Now let's move ahead. So what is the name of the new Secretary General of the United Nations Tourism? Let me tell you here that she is from UAE and the name is Sheikh. पूरा नाम आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. So Dash became the first athlete from India to be selected to represent the nation in a able-bodied competition. Let me tell you that why she is in the news, because she is a para archer. Right? And she has been selected in the able-bodied team of the country and the name of this person is Sheetal Devi. Sheetal Devi is the right answer. Absolutely right. बिल्कुल सही जवाब. सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So the Women's Wellness on Wheels initiative has been introduced by which state in order to identify for the early detection of the cancers among women? What exactly is the name of that state? The name of that state is Tamil Nadu. Next question. The 6th edition of India-Vietnam exercise WinBAX. WinBAX exercise recently commence हुई. कहां पर commence हुई? It started in Hanoi. Next question. The Canadian-Hungarian British writer won Booker Prize for his novel Flesh. तो Flesh novel के लिए इनको ये दिया गया award. What exactly is the name of the person? The name of the person is David Zalai. That is the right answer. Next question. The People First Integration Award has been given to which state for its outstanding achievement in integrating citizen-centric services with the DigiLocker? तो DigiLocker आप सभी जानते हैं कि ऐसा platform where we can store our documents and they are legally valid, right? So what exactly is the name of the state? It is Himachal Pradesh. Absolutely right. Moving ahead, 2025 World Leader for Peace and Security Award was being given to which person? He is the founder of Art of Living Foundation. It's Gurudev Shri Ravi Shankar. Gurudev Shri Ravi Shankar ji is the right answer. Moving ahead, who has been appointed as the chairman of the Fertilizer Association of India? तो Fertilizer Association of India के नए चेयरमैन का क्या नाम है? The person is Shankar Subramanian. Absolutely right. So my dear friends, with this we are done with the revision of all the previous aspects of the previous session. So there were so many articles that we covered in the last session. और यहीं पर दोस्तों, let me tell you here, you will be able to analyze that whether you are able to recall all the important points from the examination point of view or not, because across these lines you can see the question will be waiting for you in the upcoming exam. That's why to tell you just every day that make sure that you are revising the session before coming to the new session so that you are able to answer these questions, and this will be acting as the morale booster for you, confidence booster for you as well, and you can analyze whether you are able to retain the information or not. Okay, now let's move ahead to the first topic of the day, and that is the India's dirtiest cities in the Swachh Sarvekshan 2025 rankings. Guys, we all know that Swachh Sarvekshan ranking is basically the world's largest cleanliness survey which has been conducted in our country by which ministry? Ministry of Housing and Urban Affairs.
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात हो रही है, सो बेसिकली हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं और अर्बन एरियाज की क्लीनलीनेस के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट वी आर हैविंग इन आवर कंट्री? इट्स स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। सो इसी स्कीम के अंदर इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लेट मी टेल यू हियर दैट स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स 2025 को हमने काफी डिटेल के अंदर पहले कवर कर लिया था क्योंकि ये रिपोर्ट जुलाई के अंदर रिलीज हुई थी। बट लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट रिसेंटली ड्यूरिंग द न्यूज, इन द न्यूज आर्टिकल्स, द डर्टीएस्ट सिटीज ऑफ इंडिया वर बीन मेंशन्ड। The dirtiest cities as per the Swachh Sarvekshan 2025 rankings were mentioned, and you can see here that the list of the top 10 dirtiest cities of the country is been mentioned, which is topped by Madurai, which is in Tamil Nadu with a score of 4823. This was the dirtiest city, followed by Ludhiana of Punjab, Chennai, Ranchi of Jharkhand, and Bengaluru of Karnataka. So these are the top 5 cities. MLCRB, Madurai, Ludhiana, Chennai, Ranchi and Bengaluru. These are the top 5 dirtiest cities which are there in our country according to the Swachh Sarvekshan rankings 2025. So if I ask you that what is the name of that city which was the dirtiest city in our country according to the Swachh Sarvekshan ranking 2025, what is the right answer? What will be your right answer? It's Madurai. If I ask you about the Swachh Sarvekshan rankings, can anybody tell me under which ministry this particular survey has been conducted? It has been conducted under Ministry of Housing and Urban Affairs. Apart from that, if I ask you under which scheme this survey has been conducted, so you are living in the urban areas, we are assessing the urban areas because Ministry of Housing and Urban Affairs is working here. So what is the name of that scheme? It's Swachh Bharat Mission Urban 2.0, under which this particular survey has been conducted. Absolutely right. I can see here in the chat box that you have given the right answer to these questions. So Ma Amma is asking ki sir please do a video on the October monthly current affairs. We will be having that particular session tomorrow. Okay, don't worry, we are having that session tomorrow. We will be conducting the general awareness and ESI current affairs session on tomorrow on this topic. Don't worry. Right? So guys, I hope that this report is clear to all of you, and इसका डिटेल वर्जन ऑफ रिपोर्ट भी आपको करना चाहिए। आपके नाबार्ड और सेबी दोनों, आपके नाबार्ड और आरबीआई दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो इस रिपोर्ट को हमने दोस्तों इन डिटेल में कवर किया था इन द जुलाई सेशन, और इसका लिंक मैंने यहाँ पर एम्बेड कर दिया है सो दैट जब आप इस टेलीग्राम से इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इस लिंक पर जा पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू वॉच द कंप्लीट रिपोर्ट ऑन द स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स 2025 that we have already covered in our previous sessions. ठीक है, तो एक डिटेल रिपोर्ट है। I want all of you to give your full time to this report because you can see, you can use the findings of this report in your RBI phase 2 exam, and the major findings of this report can be waiting for you in the upcoming NABARD grade officer exam in the form of questions. So make sure that you are watching this session in a detailed manner, right? And I will be asking you the questions from this session also in my upcoming session as a quick bites of the revision session. So this is on you now that you are responsible for watching this session. Okay, now let's move ahead to the next important report, and the next important report is emission gap report 2025. So guys, this emission gap report, you all know that the world is basically suffering from so much of the greenhouse gas emissions that are being emitted into the environment, right? So that is why every year United Nations, the organizations which is responsible for the environment of the world, that is United Nations Environment Program, it releases this report every year, that is Emission Gap Report 2025, and this year its title is Off Target, Continued Collective Inaction Inputs, Global Temperature Goal at Risk. So आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा टारगेट ना ये हमारा टारगेट था, बट वी आर कंप्लीटली ऑफ द टारगेट। कहां पर जा रहे हैं हम? यहां पर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। सो द रिपोर्ट इज एमिशन गैप रिपोर्ट 2025, जो हमें बताती है कि हम कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं और हमें कितना कट करना चाहिए, उसके लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। ये सारी चीजों का लेखा जोखा, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस इज बीन गिवन बाय एमिशन गैप रिपोर्ट 2025. So it assessment of the gap between the current climate actions, कि जो climate actions हमें लेने चाहिए, right? जो climate actions हमें लेने चाहिए in order to achieve the sustainable environment across the world,
उसके अलावा हम कितने एक्शंस ले रहे हैं, हम यहीं तक पहुंच पाए इन एक्शंस में, जबकि हमें यहां तक पहुंचना था। अब वो क्या एक्शंस हैं, कैसे लेने थे, क्या क्या करना था, ये हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, सो एंड द एमिशंस रिडक्शंस नीडेड टू मीट ग्लोबल टेम्परेचर गोल्स। तो ग्लोबल टेम्परेचर गोल्स को मीट करने के लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए थे, ठीक है। और उसके बाद करंट क्लाइमेट एक्शंस हमने क्या लिए हैं। अब इसके बीच में ये जो गैप है दोस्तों, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, दिस इज द emission gap which is being identified by this particular report, and this is the 16th edition of the emission gap report. Okay, this is the 2025 edition of emission gap report, which is the 16th of this particular series. Now let's move ahead and try to see that what exactly this report tells us about this emission gap which exists in our world. So here, first of all, we are celebrating the 10 years of the Paris Agreement. So guys, what exactly this Paris Agreement is all about? सबसे इंपॉर्टेंट ये है Paris Agreement है क्या। तो Paris Agreement को बेसिकली 10 साल हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन 2015 के दौरान दोस्तों जब ये पेरिस के अंदर हुई थी, तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स डन सम प्रोमिसेस। तो पार्टिसिपेंट्स ने कुछ प्रोमिसेस किए। ये प्रोमिसेस थे कि आगे आने वाले टाइमलाइन के अंदर हम क्या क्या एफर्ट्स लेने वाले हैं टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सभी कंट्रीज ने कहा कि हम ये सारे एफर्ट्स करेंगे। और दिस पर्टिकुलर ट्रीटी इज कॉल्ड द पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट 2015 के अंदर जो साइन हुआ था। So the Paris Agreement has accelerated renewable energy adoption and net zero commitments. Guys, you all know that India ने भी कहा that we will be having or we will be achieving the net zero carbon emission free country by 2070. अभी जो टारगेट है इंडिया का, ये किसके अंडर आया? पेरिस अग्रीमेंट के अंडर आया। पेरिस अग्रीमेंट के दौरान सभी कंट्रीज ने कहा कि भाई we will be launching our nationally determined commitments or contributions. अभी NDC क्या है? You can think of it like this is the step. These are the different steps that we will be taking in order to lower down the temperature in our territories. So this is the NDC. वो सारे actions become the part of NDC. फिर सभी countries ने कहा कि हम ऐसे action plans बनाएंगे। सभी countries ने कहा कि हम net zero कार्बन एमिशन फ्री कंट्री बनेंगे। अब वो कब तक बनेंगे, वो टारगेट्स अनाउंस किए, लाइक इंडिया विल बी बिकमिंग इट बाय विच ईयर? इंडिया विल बी बिकमिंग इट बाय 2070, राइट। तो इन सभी चीजों को हमने इंक्लूड किया पेरिस अग्रीमेंट के अंदर, जिसके 10 साल पूरे हुए हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग 10 years of this Paris Agreement. Now move ahead. Let's try to see that in these 10 years of Paris Agreement, what exactly we have achieved. Okay, that is the point of concern here. Why so? You can see here that Paris Agreement has accelerated the renewable energy adoption. कि हमने renewable energy adoption को तो accelerate किया by the launch of Paris Agreement. And net zero commitments, like India ने कहा we will be achieving net zero carbon emission free country status by 2070. So and the country's nationally determined contributions have lowered projected warming. So दोस्तों जो projected warming थी इस सेंचुरी की, it was 3 to 3.5 डिग्री सेल्सियस, बट अब ये कम हो गई है to 2.3 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. That means Paris Agreement, since the launch of the Paris Agreement, all the actions, all the announcements done by the countries and the steps taken by them, this has also, these steps have collectively led to the decrease in the warming over this century from 3 to 3.5 degrees Celsius to 2.3 to 2.5 degrees Celsius. This is the finding of this report over a larger period. Okay. Today, that is 2025, but still this report mentions that overall efforts still fall short. जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स थे, जो हमने प्रोमिसेस किए थे, बट अभी हम उसको फॉल शॉर्ट कर पा रहे हैं। ये एक तरीके का ये वह सिनेरियो है, लाइक हमने सोचा कि we are thinking that we will be becoming the NABARD grade officer, right? And we will be studying 7 hours every day to become the NABARD grade officer. But still after, thinking that we will be studying for 7 hours, but we only studied for 5 hours. So this 2 hours of the gap, this is also creating a gap in your preparation, a gap in your selection, right? But yes, you have studied for 5 hours, definitely you have made some improvements. But this gap which is increasing day by day, so this can lead to the fall
इन द गैप ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। और यही आप देख सकते हैं रिपोर्ट बताती है ओवरऑल एफर्ट जो है स्टिल फॉल शॉर्ट, कि जो हमने डिसाइड किया था कि ये क्लाइमेट गोल हम अचीव कर लेंगे, वो हमारे एफर्ट्स अब भी फॉल शॉर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ठीक है, बट दिस रिप्रेजेंट्स अ मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर्स 2.6 टू 2.8 डिग्री सेल्सियस। लास्ट ईयर तक जो वार्मिंग थी इट वाज 2.6 टू 2.8, नाउ इट हैज फर्दर रिड्यूस्ड टू 2.3 टू 2.5। दैट इज एन अचीवमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। Now the new NDC's contributions have done little to close the emission gap. जो नए nationally determined contributions which have been announced by the respective countries, so they are not doing that much. They are doing only little to close this emission gap, although limiting warming to 1.5 degrees Celsius by 2100. देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, तो वहां पर दो चीजें डिसाइड हुई थी। सबसे पहली चीज कि हम 2 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग रखेंगे, राइट। 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हमें अपनी वार्मिंग को अचीव करना है, और उसके बाद वी हैव टू ट्राई टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू ट्राई टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। दैट वाज द पेरिस अग्रीमेंट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर ये जो नए एनडीसीज हैं, सो बेसिकली दे हैव डन लिटिल टू क्लोज द एमिशन गैप, बट दे आर लिमिटिंग द वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। दैट मीन्स अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो भी 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट वी विल बी एबल टू अचीव, टेक्निकली पॉसिबल है ये अभी भी अचीव करना। बट अगर हमने डिले किया द वर्ल्ड इज लाइकली टू टेम्परेरीली एक्सीड दिस लिमिट। अगर कोई भी डिले हुआ इन द डीप मिशन कट्स, व्हाट विल हैपन? We will not be selected for the NABARD grade officer exam. That means we won't be able to achieve the target. Similarly, the NDCs that we have collected, that we have announced collectively, they won't be allowing us in order to, अगर कोई भी डिले यहां पर होता है तो क्या होगा? टेम्परेरीली हम एक्सीड कर जाएंगे अपने टारगेट्स को। तो ये रिपोर्ट बताती है हमें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको आपके सिलेक्शन से इसलिए इसको कर रहा हूं। पहली चीज कि यहां से हम अपने लिए भी लर्निंग ले सकते हैं, और दूसरी चीज आप रिलेट करके जितना ज्यादा पढ़ेंगे चीजों को, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप दैट यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है, पास्ट ईयर्स में आए हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मूविंग अहेड। सो डिस्पाइट द पेरिस अग्रीमेंट February 2025 डेडलाइन, 60 parties representing 63% of the global greenhouse gas emissions submitted or announced new nationally determined contribution। देखिए दोस्तों, पेरिस अग्रीमेंट में ये चीज प्रॉमिस की गई कि February 2025 तक all of us will be providing our NDCs, right? But still this deadline was there. Still only 60 parties, that means 63% of the countries which are the participant of the and which were the who have ratified the Paris Climate Agreement, only 63% of the countries have announced their NDCs till now by 30th September 2025. Although 7 G20 members have submitted the new NDCs, तो 7 G20 members ने सबमिट किया है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने कोई नया एनडीसी सबमिट नहीं किया। सो वी शुड रिमेंबर हियर दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियाज टारगेट हियर, राइट? इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है, इंडिया क्या अनाउंस कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने कोई नया एनडीसी अनाउंस नहीं किया अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यस, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स दैट यस वी आर डन विद द 10 years of the Paris Agreement, this part of the key findings of this report. Okay, so in a very detailed manner we have covered it. क्या टारगेट्स है, पेरिस अग्रीमेंट क्या था, कब साइन हुआ, वहां पर क्या क्या प्रोमिसेस किए गए, क्या क्या हमने कहा कि हम करने वाले हैं, क्या क्या हमने नहीं किया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ग्लोबल एमिशन. So guys, in the global emission, this report says that what exactly is the amount of global emission that we have emitted. So global greenhouse gas emissions reached 57.7 gigatons of the carbon dioxide equivalent in 2024. So you can see here that this year 57.7 gigatons of the carbon dioxide equivalent was emitted in the environment in year 2024. When we compare this number from the last year number, we have seen a 2.3% increase. There is a 2.3% increase from 2023, which is higher than 1.6% rise. उससे पिछले साल में जो नंबर इंक्रीज हुआ था हमारा एमिशन का, that was only 1.6%. But even after taking all these actions, after announcing all these NDCs, still you can see that the global emission has increased by 2.3%, and it is more than the last year.
Okay, now this growth rate is 4 times the annual average of the 2010. 2010 में जो हमारा रेट था इंक्रीज का, उसका भी 4%, उसका भी 4 टाइम्स अब यहां पर हम सरपास कर रहे हैं. लाइक द रैपिड इंक्रीज सीन इन द 2000s. Emission rose across all major sectors and all greenhouse gases in the 2024. If we see at the micro level, when we look at the sectors, that which sectors were responsible, so here this report mentions that all the sectors have contributed very well in terms of the emissions. सभी sectors अच्छा खासा emission कर रहे हैं, right? Deforestation and land use change drove most of the surge. सबसे ज्यादा कहां हुआ दोस्तों? Deforestation and land use change. Deforestation क्या होता है? The cutting of trees, the cutting of forests, right? And the land use change. What exactly it means? It basically shows how we are changing the land in our environment, right? हम किस तरीके से उस लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उसकी प्रेजेंट स्टेटस को चेंज करके. दैट कम्स अंडर द लैंड यूज चेंज. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कहीं पर यहां पर दोस्तों फॉरेस्ट वर देयर, राइट, और हमने सारे फॉरेस्ट को कट कर दिया और हमने वहां पर फार्मिंग स्टार्ट कर दी, या फिर हमने उसको ग्रेजिंग लैंड बना दिया, या फिर हमने वहां पर बिल्डिंग्स बना दी, राइट? सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द लैंड यूज चेंज, right? So basically this was the reason, and the deforestation, these are the two major reasons that why exactly this emission have increased, rising 21% and accounting for 53% of the total global increase. So total global increase का 53% तो इसी की वजह से था. और दोस्तों क्या होता है कि जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज के अंदर स्टोर होती है वो रिलीज होती है, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो ज्यादा इंक्रीज होता है. और दूसरी चीज क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, हमारे फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, राइट, एंड दे गिव अस द ऑक्सीजन बैक. बट जब इन फॉरेस्ट को हमने काट दिया तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस थे, इनको अब ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थे, अब इनको एब्जॉर्ब करने वाला भी नहीं रहा, साथ में इनको कट करने के बाद अलग से कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हुई. So this is the negative impact of coming up with this particular activities that we do in the name of development of the world, right? So fossil carbon dioxide emissions rose by 1.1% in 2024. तो ये 1.1% increase हुआ, contributing 36% of the total increase in the global greenhouse gas emissions. Guys, let me tell you, आज की जो रिपोर्ट है थोड़ी ज्यादा डेटा हैवी है, I know, बट इसको बड़े इत्मीनान से हम इसको कवर करेंगे. अभी तक अच्छे से डिस्कस करके कवर कर रहे हैं, बाद में आप इसको फिर से वापस आना, इस इंपॉर्टेंट डेटा को रिवाइज करना, ठीक है? दैट इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू. अभी के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है. एक बार समझ में आ गया तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमें करना है. ओके, तो ग्लोबल एमिशंस आर वेरी क्लियर. कितना एमिशन हुआ ये याद रखना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 2.3% इंक्रीज हुआ, सभी सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था. और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी हैं 2024 के अंदर. सबसे ज्यादा मेजर रीजंस क्या थे ये भी हमने कवर किया. अब बढ़ते हैं एमिशन का ट्रेंड कैसा है. व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रेंड ऑफ एमिशन? लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी डिक्रीज, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? देयर वाज अ डिक्रीज और इंक्रीज. कौन से रीजंस थे जो सबसे ज्यादा एमिट कर रहे थे और उन्होंने अपने एमिशन को कम किया? तो ये सारी डिटेल्स हम यहां पर कवर करेंगे. सो हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट पार्ट, द G20 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द अफ्रीकन यूनियन प्रोड्यूस 77% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस. So 77% of the global emissions are only been done by G20 countries, excluding the African Union, right? With their emission rising from 0.7%, and many non-G20 nations also saw notable increases. So G20 nations तो सबसे ज्यादा responsible हैं. If I ask you if it has been asked you in the examination, which one of the following is responsible for the most emission across the world, that is 77% of the global emission, what will be the right answer? The right answer will be G20. Okay. Among the 6 largest emitters, जो सबसे बड़े emitters हैं, European Union was the only one to reduce emission. So जो हमारे 6 largest बड़े emitters हैं, वहां पर सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने अपने emissions को कट किया. ये हम देख सकते हैं इस ग्राफ से. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़े emitters थे, राइट, यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर आप देखेंगे ये रिडक्शन हुआ है -58.6. बाकी सब जगह प्लस है, यूरोपियन यूनियन में माइनस है, राइट? So European Union was the one जिसने यहां पर रिडक्शन शो किया है in the emissions. Now highest absolute growth in the emission occurred in
इंडिया फॉलोड बाय चाइना एंड इंडोनेशिया। तो गाइस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इंडिया, चाइना, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एब्सोल्यूट ग्रोथ एमिशंस के केस में देखी जाए तो इंडिया और चाइना के अंदर हुई है। सबसे ज्यादा एमिशन इंडिया और चाइना में हुई है, राइट। एमिशन ग्रोथ विच आर अमंग द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ग्लोबली। अगर ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इंडोनेशिया ने सबसे ज्यादा इंक्रीज दिखाया, फॉलोड बाय इंडिया 3.6%। तो इंडिया के अंदर भी दोस्तों इतनी ज्यादा और यहां बेटर काम नहीं किया गया। इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो कि ग्रोथ लेवल सबसे ज्यादा है एमिशंस का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2024 2023 लेवल से अगर हम देखेंगे तो अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, G20 सबसे ज्यादा एमिट करता है, ठीक है। कंट्रीज के मामले में देखा जाए तो इंडिया और चाइना और इंडोनेशिया, दीज आर द 3 टॉप जहां पर सबसे ज्यादा एमिशन बड़े हैं। अगर हम बात करें उस एरिया की जहां पर कम हुआ रिडक्शन, जिन्होंने रिडक्शन शो किया, दैट वाज यूरोपियन यूनियन। So that is the most important part that we need to cover here, okay, and we need to understand from here. Moving ahead, so you can see here that what is the total gigaton of the carbon dioxide emission and what is the per capita greenhouse gas emission. So यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया कौन से लेवल पर है यहाँ पर, एंड यहाँ पर इट्स स्कोर इज 4.4, here it is 3.3, ठीक है। So on the top it's China, USA, then India. India is on the 3rd level in terms of total greenhouse gas emissions. And when it comes to the per capita greenhouse gas emission, you can see here India is on the 7th position with a score of 3, right? So this is something that we have to see here. And again थोड़ी सी जो रैंकिंग्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल टेम्परेचर प्रोजेक्शंस की तरफ। So now till now we have discussed that what exactly is the trend in the emissions, right? सबसे ज्यादा एमिट कौन कर रहा है, हमारे टारगेट्स क्या थे, क्या हमने सेलिब्रेट किया, क्या हमारा रिजल्ट रहा। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर प्रोजेक्शंस की, क्योंकि हमने देखा पेरिस एग्रीमेंट में वी वांट टू कीप द टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस of the pre-industrial levels and we want to keep it limited to the 1.5 degrees Celsius, right? So now you can see here moving from the current policies to the conditional indices can cut warming projections by 0.5 degrees Celsius and achieving all net zero pledges cuts another 0.4 degrees Celsius. तो जो हमारी conditional national determined contributions हैं वो warming को cut कर सकते हैं by 0.5 degrees Celsius और वो सारे achieving all net zero pledges cuts another 0.4 degrees Celsius। जो हमने अनाउंस किया कि हम net zero कार्बन एमिशन फ्री बन जाएंगे तो उससे क्या होगा 0.4 डिग्री सेल्सियस तक का हमारा टेम्परेचर कट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025। मूविंग अहेड, इफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज विद द करंट पॉलिसीज, अगर प्रेजेंट पॉलिसीज से ही हम चलते रहे तो देन वार्मिंग विल स्टे बिलो 2.8 डिग्री सेल्सियस but this improves to 2.5 degrees Celsius if unconditional indices are fully implemented by 2035। अगर unconditional indices को हमने fully implement किया 2035 तक, so basically यहां पर ये फिर से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर इंप्रूव हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि यहां पर करंट पॉलिसी से 2.8 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, बट अगर हम अपने अनकंडीशनल इंडिसेस को इंप्लीमेंट करते हैं 2035 तक, देन इट विल मूव टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। Withdrawal of the United States from the Paris Agreement. So guys, we all know that US has basically withdrawn from the Paris Agreement. तो इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्यों? क्योंकि 0.1 डिग्री सेल्सियस का लॉस हमें यहां पर हुआ विद द withdrawal of USA from the Paris Agreement। आगे बढ़ते हैं। By 2050, the global warming is expected to be well below 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ग्लोबल वार्मिंग 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होगी with 21 to 33% chance that it could already cross 2 डिग्री सेल्सियस। 21 to 33% चांस है कि वो it will cross 2 डिग्री सेल्सियस। अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो ये है हमारा कि जब हम अपने कंडीशनल इंडिसेस को भी कंबाइन कर दें विद द नेट जीरो कमिटमेंट्स, तो इससे क्या होगा, वी विल लिमिटेड टू 1.9 डिग्री सेल्सियस, द सेम एज द लास्ट ईयर्स एस्टिमेट, जो हमारा पिछले साल का एस्टिमेट भी था। अगर हमने अपने कंडीशनल इंडिसेस को नेट जीरो कमिटमेंट्स के साथ कंबाइन किया, उससे बेटर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, 1.9 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। रिडक्शंस की बात करें तो रिडक्शन टू एनुअल एमिशन of 35% and 55% compared with the 2019 levels are needed in 2035
to align with the Paris Agreement of 2 degree Celsius and 1.5 degree Celsius pathways. तो दोस्तों रिडक्शन, अगर एनुअल एमिशंस को हम 35 और 55% तक रिडक्शन करते हैं एज कंपेयर विद द 2019 लेवल्स, सो बेसिकली तो वी आर नीडेड इन 2035 टू अलाइन विद द पेरिस अग्रीमेंट pathways respectively. So that's about the global temperature projections that we are required to understand here. ठीक है जी, तो हमने इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है दोस्तों. अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, now quickly tell me in the chat box what is the name of organization which has released this report. Quickly tell me in the chat box what is the name of the organization. It is United Nations Environment Program which has basically released this report, right? Apart from that we have celebrated 10 years of Paris Agreement और उसके दो फिगर्स याद रखने हैं, 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस. एंड 2015 में ये साइन हुआ था UNFCCC जो कि पेरिस के अंदर हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहां पर ये देखा कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एमिशंस के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड कौन सा रीजन है. इट इज द G20 कंट्रीज जो 77% रिस्पॉन्सिबल है, राइट. सबसे ज्यादा मेजर अगर हमने देखा एमिशन और रिडक्शन कहां पर हुआ, अगर हम ग्लोबली हाईएस्ट एमिटर्स की बात करें उस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो रिडक्शन दिखाया वो किसने दिखाया, यूरोपियन यूनियन ने दिखाया. एंड सबसे ज्यादा एमिशन ग्रोथ कहां पर हुई, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया के अंदर. एब्सोल्युटली राइट, आई कैन सी इन द चैट बॉक्स. अवंतिका, यू हैव गिवन द राइट आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस. वेल डन. That really shows that you have understood this report in a very detailed manner, right? So guys, these are the most important things that we are required to cover. And now let's move on to the next important report of the today's session, that is the World Cooperative Monitor 2025. So अभी हमने cover किया था that Ministry of Cooperation is celebrating International Year of Cooperatives in 2025. And recently International Cooperative Alliance ने एक report निकाली, and when they released the when they released the World Cooperative Monitor report with the scientific and the technical support of the European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, they identified and explored the economic and social impact of largest cooperatives. तो जो हमारे सबसे बड़े cooperatives है across the world, उनको हमने analyze किया, assess किया और explore किया. On the basis of that we got some beautiful results which are in the favor of India. Now what exactly these results are? These results are that by turnover over GDP per capita, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे बड़े cooperatives in terms of 2 categories. एक category है by turnover, दूसरी कैटेगरी है बाय टर्नओवर ओवर जीडीपी पर कैपिटा. सो बाय टर्नओवर के केस में यू कैन सी हियर दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांस व्हिच हैज टॉप्ड दिस रिपोर्ट, राइट, फॉलोड बाय स्टेट फार्म ऑफ यूएसए, REWE ग्रुप ऑफ जर्मनी. बट व्हेन इट कम्स टू द टर्नओवर ओवर जीडीपी पर कैपिटा, लेट मी टेल यू हियर दैट हियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैव टॉप्ड इट ऑन द टॉप 2 पोजीशन. इट्स गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन. गाइस, you must have drink the Amul milk, right? So we are talking about Amul here. So Amul India is on the top in terms of by turnover over GDP per capita. And on the second position it was IFCO India, that is Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited, right? Followed by the France organization on the third position, then Brazil and another France organization. So by turnover over GDP per capita के अंदर top 2 कौन है, Amul India and IFCO. Apart from that, अगर हम बात करते हैं by turnover, it is the organization of France which is there on the top. And I can see here, yes. Now guys, if I ask you what is the name of the body which has released the World Cooperative Monitor 2025, what is the right answer? The right answer is International Cooperative Alliance. The second question is, which group has topped in the biggest cooperatives of the world on the basis of by turnover? What is the right answer? It's Groupe Credit Agricole of France. And when I ask you that which cooperative are on the top in terms of by turnover over GDP per capita, what is the right answer? On the top it's Amul India. On the second position it is IFCO India. Absolutely, this is the right answer. So well done guys for giving me the right answer in the chat box. This is really great that you are giving me the right answers. So that was all from the today's session. Now we can move on to the topics of the today's session, right? Now we are done with the topics of the today's session. Now we will be practicing the MCQs. तो अभी तक हमने टॉपिक्स को कवर किया, बट क्या सिर्फ टॉपिक्स को कवर करना सफिशिएंट है? आंसर इज नो. काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते हैं बट उनके ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करते. दोस्तों, जब तक आप एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, यू नेवर नो कि क्या आपकी रिटेंशन इतनी है, क्या आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है
क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, क्या क्वेश्चंस के आंसर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर योर फर्स्ट फेज इज द ऑब्जेक्टिव पेपर ओनली, राइट? सो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, वेयर दीज एमसीक्यूज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. So here the first question for all of you from the Swachh Sarvekshan 2025 rankings, and the question is you have to identify here which of the following cities constitute the top 3 dirtiest cities in India for 2025. So Swachh Sarvekshan 2025 launched by Minister of Housing and Urban Affairs under the Swachh Bharat Mission 2.0. कौन सी cities है जो top 3 के अंदर हैं in the dirtiest cities? What is the right answer? Quickly tell me in the chat box. So what is it? So this is Madurai, Ludhiana, Chennai. These are the top 3 cities in the top dirtiest cities of the country. Madurai, Ludhiana and Chennai, MLC. This is the right answer. Okay, I can see in the chat box. So Rishish has given the right answer to this question. Well done. Let's move on to the next question. Next question is, with reference to the global emission and sectoral trend highlighted in the emission gap report, consider the following statements and try to identify the correct options. So my dear friends, here you need to identify here that first of all, we need to follow the 3-step formula. The first step is identify the central topic. The central topic is emission gap report. Second thing is identify the demand of the question. We need to identify which of the following statements are correct here, right? Now the third thing is analyzing the keywords and try to identify whether they are right or wrong. Then we can answer the question. So first statement is global greenhouse gas emissions rose to 57.2 gigaton equivalent of carbon dioxide in 2024. This data is right or wrong? This is absolutely right. And we saw a 2.3% increase from the 2023. This is right or wrong? This is also right. So yes, this is the right answer. Second statement, land use change in forestry emissions contributed over half of the total global increase in the emission 2024. So is the statement right or wrong? That's what we need to understand here. Third statement, among the 6 largest emitters, China was the only one to record a reduction in the emissions during 2024. Guys, let me tell you here, अगर हम बात करते हैं reduction की, was China was the one? No. Which region was there which has improved? Can anybody tell me that? What is the name of that particular region जिसने की reduction show किया था in the emissions? It was European Union. European Union, and that's why this statement is incorrect. This statement is correct. This is correct. So right answer will be option B, that is 1 and 2 only. And European Union was the one which has shown reduction in the 6 largest emitters, and that is why this is the right answer. Absolutely right. So Avantika, Rishish, both of you have given me the right answers. Let's move on to the next question. As per the World Cooperative Monitor, which cooperative ranked as the top performer in the category of turnover for 2023? So guys, इसको टर्नओवर ओवर जीडीपी पर कैपिटा कर दो, ठीक है? So what will be the right answer here? Okay, पहले सिर्फ मुझे टर्नओवर के अकॉर्डिंग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर. आपको मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है कि बाय टर्नओवर और बाय टर्नओवर ओवर जीडीपी पर कैपिटा. So by turnover it was group credit agricole option D, which is the right answer. ओके अगर हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, तो उसके अंदर अमूल इंडिया और इफको इंडिया ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर थे. अमूल ऑन द टॉप, इफको इज ऑन द सेकंड पोजीशन. I can see in the chat box everybody has given the right answer. Well done, my dear friends. So this shows that yes, you have understood this report in a very detailed manner, in a particular manner according to which we are required to do it. And now we are moving on to the next question. So according to the World Cooperative Monitor 2025, which of the following represent the top 2 cooperatives ranked by turnover over GDP per capita for 2023? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है. What will be the right answer? Amul and IFFCO. So option C will be the right answer. Absolutely right. Option C is the right answer. Absolutely right. Well done. Everybody has given the right answer. So guys, with this we are done with all the important MCQs which can be asked from these reports, right? And now, before concluding this session, I am going to ask you another important MCQ on this emission gap report to analyze that whether we are able to retain all the important data or not. तो आपको क्या करना है, इस सेशन को एक बार फिर से रिवाइज करना है. उसके बाद you have to go back and then you are required to identify, come to this question and try to solve and try to answer this question in the comment section. The question is on the emission gap report 2025. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, बहुत ही इजियर लाइंस पर, और जिस डायमेंशन को हमने कवर किया आज के सेशन में उसी डायमेंशन पर ये
दी गई हैं, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर। सो हियर दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन एंड नाउ होमवर्क क्वेश्चन अगर लास्ट सेशन की बात करते हैं, द क्वेश्चन वाज ऑन द बांग्लादेश एसोसिएशन विद द यूएन कन्वेंशन। हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2। क्यों? क्योंकि यूएन वाटर कन्वेंशन ओपन हुआ था 2016 के बाद, ना कि 2020 के बाद। So that's why the third statement is incorrect. Right answer is A, 1 and 2. And these are the list of the star performers from the previous session. That means if you also give me the right answer to the homework question in the comment section, you will be finding your name here as the star performer. Like Mani, Pranathi, whatever it takes, Naganjanli, we have Vikram, Prakriti, Suraj, Vidya, Rishish, Priya, Agriko, Prerna, Sakshi, Somnath, Harish. So all these people are the star performers from the previous session. Okay. And Prerna was having a query, sir, is this session relevant for SEBI grade A also? So the GA part, so whatever we are covering in this session, it can also be asked in your SEBI grade A officer exam. तो ये आपके सेबी ग्रेड ऑफिसर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो जीए आर्टिकल्स है वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, राइट। और जो ईएसआई आर्टिकल्स हैं वो थोड़े से लेस रेलिवेंट हैं, बट वो सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। एंड यहां पर हम उसको बहुत डिटेल लेवल में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टार परफॉर्मर्स एंड आई एम वेटिंग for you to be the next star performer, and for that you have to ensure that you are giving me the answers in the chat box. So यहां पर क्वेश्चन आपका गलत होता है, सही होता है, doesn't matter. The matter is your intent to answer the question, your intent to participate, so that you can do the mistake, you can learn from it, and you can improve on that area. So guys, now this is all from the today's session. और अब आपको इस सेशन की रिविजन के लिए पीडीएफ रिक्वायरमेंट होगी, that you can डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। तो 24 आवर्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन, एंड नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन ऑल्सो शेयर योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई ऐसी क्वेरी आपकी विच इज यू नो बियॉन्ड दिस सेशन एंड यू आर फेसिंग सम प्रिपरेशन इश्यूज or other issues related to your exam preparation, you can definitely share your queries to us at 8146207241 or at hello@edutap.co.in, and we will definitely love to answer your queries to resolve your issues so that your journey of becoming the next officer is as smooth as possible. Okay, so it was, I know that today's session was really data heavy, because हमने एक ऐसी रिपोर्ट को कवर किया जो बहुत ज्यादा डेटा हैवी है, बट लेट मी टेल यू कि काफी फॉर्डर मटेरियल आपको अपने आरबीआई फेज 2 पेपर के लिए मिल गया है, और नाबार्ड फेज 1 में भी इस रिपोर्ट को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कवर किया, तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है, सो मेक श्योर आप उसकी प्रिपरेशन को अच्छे से कवर करें, ठीक है। सो इट वॉज क्वाइट ए डिटेल्ड सेशन, बट यस एन इंपॉर्टेंट वन। So thank you Avantika for your kind words. Now my dear friends, I will be meeting you in the next session, and make sure all of you are joining us tomorrow 6 p.m. because Gurkira sir and me are coming with the very important GA plus ESI monthly revision session of October 2025. अगर आपने अक्टूबर मंथ को अच्छे से कवर कर लिया तो ये चैलेंज होगा कल आपके लिए टू सी दैट कितनी चीजें आपको याद है, और ये आप अगर नहीं किया है तो आपके लिए काफी इजी होगा कि हमें किस एरियाज को कवर करना है अच्छे से, ये हम इस सेशन से सीख पाएंगे। और आपके पास आज का दिन है कि आप अक्टूबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें, और कल आकर सेशन के अंदर देखेंगे कितनी चीजें आपको याद है, ठीक है। नाउ गाइस, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल